The values in the form of increasing. X3 than X4. In generally, I am writing as xn plus 1 is greater. x2 से increase x1 से बड़ा x2 है, x2 से बड़ा x3 है. Therefore, in generally, I am writing as x1 plus 1 is greater than xn. xn plus 1 is greater than xn. For example, n is equals to 1. N is equals to 1 means it is becomes 1 plus 2 x2. x2 is greater than x1. n is equals to 2. x3 is greater than x1. In general, ऐसा भी बोल सकते हैं xn is less than xn plus 1. Then it is called as a monotonic increasing. See here, minus 1 is less than minus 3. Minus 3 is less than minus 5. Minus 5 is less than minus 7. It indicates x1 is less than x2. x2 is less than x3. x3 is less than x4. In generally, I am writing as xn plus 1 is less than xn. That is, this will be called as a decreasing forms. Already previous class में हुआ था. xn plus 1 is less than xn. xn is greater than xn plus 1. Just that less than or equals to. Only less than रहा, it is strictly. Equal रहा बोले तो only monotonic. Either it is a monotonic or increasing form में तो रहने दो और डिक्रीजिंग फॉर्म में से तो रहने दो. देन इट विल सेड टू बी मोनोटोनिक बोल के ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हुआ था. जस्ट मोनोटोनिक के लिए क्या है, x1 xn plus 1 is less than or equals to xn. xn is one more example देते 1 divided by n. Either it is increasing or decreasing, check it. n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाइए, वैल्यूज इधर इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है, चेक इट. 1 by n is increasing or decreasing, anyone? n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाइए. yes, very good. yes, Decreasing. Yes, it is decrease. 1 by 1, 1 by 2. 1 by 1 means it is 1. 1 by 2 means it is 0.5. 1 by 3 means it is 0.333. 1 by 4 means it is 0.25. Therefore, it is decrease or that is decreasing forms. Now, just for example, n square. The sequence is n square. Now, it is monotonic increase or decrease? Increasing, ma'am. Monotonic increasing form. Therefore, ये already definitions हुआ था. अब उसके ऊपर जस्ट रिकैप कर दिए. जस्ट रिकैप में क्या है, xn plus 1 is less than xn रहा. xn plus 1 is less than xn रहा. Then you have to take as decreasing. xn is less than xn plus 1 रहा. और xn is greater than xn plus 1 is greater than xn रहा. Then you have to take as increasing. If anyone either it is increasing or decreasing रहा, then you have to say it is a monotonic. इसके ऊपर एग्जाम्पल देखेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. प्रूव दैट नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. प्रूव दैट द सीक्वेंस 3n plus 7 divided by 4n plus 8 is monotonic. Monotonic means either increase or decrease form में है कि नहीं, ये चेक करना. Here solutions. Step देखो. First I am taking as xn is equals to 3n plus 7 divided by 4n plus 8. Just now here increase और decrease प्रूफ करने के लिए n plus होना. जस्ट n के बदले में मैं क्या यूज करती हूँ, अब n plus 1 करती हूँ. Now it is equals to xn plus 1 is equals to, you have to use n के बदले में n plus 1. Now it is equals to 3 of n plus 1 divided by 7 divided by 4 of 4n n plus 1 plus 1 plus 8 plus 8. Simplify this one. Now it is becomes 3n plus 3 plus 7 divided by 4n plus 4 plus 8, which is equals to, simplify this one. 3n Now plus 10 xn plus 3n plus 10 divided by कितना होता है देखिए, 4n plus divided by 12 4n plus 12. 12 Just I am writing as 3n plus 10
divided by, here 4 is common, now it is becomes n plus 3. N plus 3. Now subtract these two. Xn plus 1 minus xn is equals to, मोनोटोनिक है बोले तो इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रूफ करना है, इधर लेस देन 0 होता है कि ग्रेटर देन 0 होता देखेंगे, जस्ट उसके ऊपर चेक करेंगे ना. xn प्लस 1 माइनस xn दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए. xn प्लस मीन्स 3n प्लस 10 डिवाइडेड बाय 4 इंटू n प्लस 3 माइनस 3n plus 7. इसको भी कॉमन लेती हूँ. 3n plus 7, here common is 4. 4 common आया तो it is n plus 2. 3n plus 7 divided by 4 into n plus 2. First of all, 1 by 4 is a common, take outside. Left is 3n plus 10 divided by n plus 3 minus 3n plus 7 divided by क्या हो जाता है n plus 2. टेक एलसीएम. एलसीएम क्या हो जाता है बोलिए, व्हाट इज एलसीएम? plus 2 n plus 3. यस n plus 3 इंटू n plus 4, n plus कितना होता है n plus 2. एलिमेंट कितना मिलता है देखिए, यस एलिमेंट कितना बोलते हैं बोलिए, 3n plus 10 into n plus 2. यस 3n plus 10 into minus 3 n plus 2 minus 3n plus 7 into n plus 3. यस मल्टीप्लाई दोस टू टर्म्स एंड सिंप्लीफाई इट. उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए. नाउ इट इज इक्वल टू, फिर एक मिनट पेपर ये कर रहा, एक मिनट. ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಓಕೆ, Sorry, ma'am. 1 divided is 1 divided by 4. Now n plus 3 into n plus 2 as it is. Multiply these two. 3n 3n into square. n, that is there. 3n into 2 it is becomes 6n plus 10n into n it is 10n plus 10 into 2 it is becomes 20. माइनस में अंदर मल्टीप्लाई कर रही देखो, माइनस 3n स्क्वायर, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3n इंटू 3, that is it is becomes minus 9n. 7 into n minus 7n. Again 7 3s, it is becomes 21 minus 21. Now simplify this one. 1 divided by 4 plus 3n minus 3n cancel. Get cancel. Yes. Minus 10. Wait a minute. Yes, it is becomes 6n plus 10n. It is 16n. 16n minus 9n minus 7n. Again it is minus 16n. Just it is cancels. Again 20 minus 21. It is becomes minus 1 divided by n plus 3 into n plus 2. It is a positive means greater, letter carry it xn plus 1 minus xn. It is xn plus 1 minus xn. It is negative means greater than 0 or less than 0. Greater than 0 or less than 0. Greater than. नेगेटिव टर्म्स, यार नेगेटिव वैल्यूज मिल रहा है, नेगेटिव वैल्यूज मिल रहा है बोले तो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0. नेगेटिव वैल्यूज इज जस्ट हियर 0 1 2 3 minus 1 minus 2 minus 3. इस तरफ आए तो ग्रेटर, इस तरफ आए तो इस तरफ आए तो लेस देन 0. हियर नेगेटिव 1 आया था, नेगेटिव माइनस 1 आया, it is less than 0. Therefore xn plus 1 is less than xn. नेगेटिव इस तरफ भेज दीजिए, xn हो जाता. Therefore xn plus 1 is less than xn means it is monotonic increasing or decreasing. Monotonic increasing or decreasing? Increasing or decreasing? Yes. Anyone? चैट बॉक्स में रख लेते रही. Increasing or decreasing? Madam. Yes, very good. Yes, it is decreasing. Therefore, it is a monotonic decreasing. Hence, it is a monotonic. It is a monotonic decreasing. Hence, this implies it is a monotonic.
एनी वन रहे तो either increase तो रहना, decrease तो रहना. Just what negative terms we are getting. Therefore, it is a monotonic decreasing means it is a decreasing. Similarly, or any doubt about these problems? क्या कर दिया बोलो? No, ma'am. xn से xn plus. Just देखिए simple problems. xn given था. xn को क्या कर दिए? xn plus 1 कर दिए. n के बदले में क्या यूज कर दिए? n plus 1 कर दिए. नेक्स्ट वो दोनों को क्या कर दिए? सब्ट्रैक्ट कर दिए. If negative term आया बोले तो it is less than 0. Less than 0 means it is monotonic decreasing. पॉजिटिव वैल्यूज आया बोले तो ग्रेटर देन 0. देन इसको नेगेटिव को इस तरफ दीजिए. इट इज इंक्रीजिंग फॉर्म. इतना ही टर्म्स. जस्ट ओनली 2 स्टेप्स. स्टेप 1 xn लीजिए. स्टेप 2 n plus 1 कर दीजिए. स्टेप 3 आप लोग n plus 1 minus xn कर दीजिए. वी गेट नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज मिलता है. पॉजिटिव मिला बोले तो इंक्रीजिंग बोल दीजिए. नेगेटिव मिला तो डिक्रीजिंग बोल दीजिए. Decreasing. एनी डाउट अबाउट दिस प्रॉब्लम? एनी No, डाउट ma'am. अबाउट दिस प्रॉब्लम्स? वन मोर प्रॉब्लम को जाएंगे. नेक्स्ट प्रॉब्लम को जाएंगे. Yes. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम को जाएंगे. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल. सबको क्लियर? सबको क्लियर? ओके, से नेक्स्ट एग्जांपल. Prove that. Next example. Prove that the sequence xn is a monotonic where xn is equals to 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 square plus 1 by 2 cube plus so on up to 1 raised to the power of 2n plus 1. It is a monotonic increasing or decreasing करना है. शेयर मोनोटोनिक बोले तो इधर इंक्रीज फॉर्म तो रहना, डिक्रीजिंग फॉर्म तो रहना. प्रूफ करना है हम लोग को. इससे तो मालूम हो रहा है कि इंक्रीजिंग हो रहा है क्या डिक्रीजिंग हो रहा है. मालूम हो रहा है इंक्रीज होता जा रहा है वैल्यूज. देयरफॉर इंक्रीजिंग हो रहा है हमारे प्रूफ करना है. शेयर xn is equals to 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 square plus 1 by 2 3 power of that divide 2 raised to the power of n is given. Here 1 divided by 2 raised to the power of n. xn plus 1 is equals to एक टर्म से ऐड हो जाता है. 1 by 2 1 by 2 स्क्वायर 1 by 2 to the power of 3 प्लस 1. इधर आया तो क्या हो जाता है 1 raised to the power of 2 raised to the power of n minus 1 प्लस इधर 2 raised to the power of n as it is. और एक टर्म्स ऐड हो जाता है 2 raised to the power of क्या हो जाता है आप लोगों को n plus 1. इधर पीछे आया तो क्या हो जाता है 2 raised to the power of n minus 1. n minus 1 means it is addition. n के बदले में क्या यूज करना है n plus 1. n plus 1 minus 1 cancel, it is becomes 2 raised to the power of n. 2 raised to the power of n के बदले में क्या हुआ 2 raised to the power of n plus 1. Now subtract these two. xn plus 1 minus xn is equals to, subtract these two. Subtracting these two means simple. Can I subtract here only? इसको इधर ही subtract करते हो. Otherwise 1 by 2 1 by 2 square 1 by 2 to the power of 3 plus 1 by 2 to the power of n minus 1 by 2 1 by 2 square 1 by 2 to the power of 3. इधर और एक टर्म्स ऐड हुआ सो है 1 divided by 2 to the power of n plus 1 because xn plus 1 minus xn plus so on 1 divided by 2 to the power of n. ये दोनों का सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर क्या आता बोलिए? यस, इधर 1 plus 2 to the power of n है देखो डैश होने के बाद. यस, आंसर क्या आता बोलिए दोनों का सब्ट्रैक्ट करने के बाद? 1 divided by Anyone? 2 power 2 power One power divided by one factorial. प्लस 1 माइनस ये पूरा माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरा माइनस होता है. प्लस 1 by 2 minus 1 by 2 प्लस 1 by 2 स्क्वायर minus 1 by 2 स्क्वायर प्लस 1 by 2 to the power of 3 1 by 2 2 to the power of n 2 to the power of n is cancelled. Only left is 1 divided by 2 to the power of n plus 1. xn plus 1 minus xn. Now it is a positive values. Positive values means it is greater than 0 or less than 0. It is a greater than 0 or less than 0. Yes, anyone? Greater than. Greater than 0 or less than 0?
Yes, it is positive values means greater than 0. Xn plus 1 is minus xn is greater than 0 means xn plus 1 is greater than xn. Therefore, it is a xn. monotonically increasing or decreasing? Increasing or decreasing? Greater or decreasing? Increasing, ma'am. Yes, it is a increasing or decreasing? Yes. Tonic increasing, चैट ma'am. बॉक्स में डाल दीजिए, Increasing, madam. चैट बॉक्स में डाल दीजिए, आप लोगों को जो भी आंसर देना है चैट बॉक्स में डाल दीजिए. यस, चैट बॉक्स में डाल दीजिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. चैट बॉक्स. Yes, very good. It is a increasing. Therefore, it is a increasing means it is a monotonic. It is a monotonic. Any doubt about the second example? Any doubt about the second example? No doubt? Okay. Next example को जा रहे हैं. Example number 3. इतना ही करना है हम लोग को xn से xn plus 1 करना है. Prove that xn is equals to 3 plus 1 by n is a monotonic. आंसर बोलो आप लोग. दोनों एडिशन करो, सब्ट्रैक्ट करो, नेगेटिव आता है क्या पॉजिटिव आता है देखिए, विदाउट माइंड कैलकुलेशंस करना. xn इज इक्वल टू क्या गिवन है बोलिए. xn इज इक्वल टू क्या गिवन है? 3 plus 1 by n. xn plus 1 क्या आ जाता बोलिए? xn plus 1 yes 3 plus 1 by n plus 1. 3 plus 1 by n plus 1 as it is right. Now दोनों को नेक्स्ट स्टेप क्या करना बोलिए? नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू? xn plus 1 minus xn plus 1 minus xn. xn. Okay, xn plus 1 value is 1 divided by n plus 1 minus 1 divided 3 plus minus of 3 plus 1 by n. Now subtract these two. 3 plus 1 by n plus 1 minus 3 minus 1 by n. 1 by These n. two are cancelled. 1 by n plus 1 minus 1 by n. Now take LCM. LCM क्या आ n जाता बोलिए? minus n n into n plus n 1. plus n plus 1. now it is become n. इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए. -1 से मल्टीप्लाई करें तो -n -1 n cancels. Therefore answer is Minus 1 divided by n into n plus 1. n into n plus 1. Either it is increasing or decreasing. xn less Decreasing. than 0 or greater than 0? Less than 0 or less greater than than 0? 0. Less than 0. It is it's very good. Chat box में आ रहा है less than 0. It is less than 0 means increasing or decreasing? Less than 0 means it is increasing or decreasing? Therefore it is xn plus 1 is less than xn. Therefore it is decreasing. It is a decreasing means it is a monotonic decreasing. It is a monotonic decreasing means it is a monotonic. It is a monotonic. Any doubt about third problems? सिंपल है डिफिकल्ट है? सिंपल है डिफिकल्ट है? सिंपल है सिंपल है. ओके मैं और एक एग्जांपल डालती हूँ, आप लोग आंसर बताना. प्रूव दैट 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus so on 1 by n is monotonic. ಈಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅದ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅದ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇದು xn ಆಯ್ತು. xn is equals to 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus dash 1 by n. xn plus 1 एक टर्म्स ऐड हो जाता है. Whenever you are coming the summations, we have to adding one terms 1 by 2, 1 by 3 plus 1 by n as it is. One terms ऐड हो जाता है 1 by n plus 1. सब्ट्रैक्ट करो, ग्रेटर देन 0 हो रहा क्या लेस देन 0 हो रहा बता दीजिए. आंसर क्या आ जाता बोलिए. आने के बाद इंक्रीज हो रहा क्या डिक्रीज हो रहा बता दीजिए. यस वेरी गुड. क्वेश्चंस डालने से पहले आंसर आ रहा है आप लोगों का. है यस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? यस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग Decreasing or increasing? Check it.
थोड़े लोग इंक्रीज बोल रहे, Increase, थोड़े ma'am. लोग डिक्रीज. पॉजिटिव आ रहा है क्या नेगेटिव आ रहा है? Either we are getting positive or negative. Yes, positive. Ashwini is right. Aishwarya is right. Aishwarya, check it your answers. Aishwarya, check it. Aishwarya, Ashok, check it your answers. Aishwarya, Ashok, check it your answer again. Yes, others all are correct. Yes, positive. Sachin, Deepika positive. Ashwini positive. Yes. Simple question. से दोनों का subtract plus 1. एक मिनट. Yes, xn plus 1 is the xn plus 1 minus xn कर रही हूँ. Now it is equals to 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by n plus 1 by n plus 1 minus Minus. पूरा प्लस रहे तो माइनस 1 minus 1 by 2 minus 1 by 3 माइनस कर रही हूँ ना. So on minus 1 by n. 1 cancel, 2 cancels, 1 by 3 cancel, 1 by n cancels. Therefore, it is becomes 1 divided by n plus 1. N plus Therefore, 1. it is xn plus 1 minus xn is greater than 0. Therefore, xn 0. plus 1 is greater than xn. Therefore, it is a monotonically increasing. Increasing. Next one more problem डालती हूँ. आंसर क्या आता है बोलना. एक ऐसा 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 आया ना, उसी तरह उसका आंसर क्या आता देखना. xn is equals to, next example, xn is equals to 1 plus 1 by 1 factorial, 1 divided by 2 factorial, 1 divided by 3 factorial, dash 1 divided by n minus 1 factorial. आंसर क्या आ जाता बोलिए. माइनस 1 का 1 प्लस एडिशन कर दे रहे. इस करो. टू मिनट्स टाइम देते करो. यस, सब लोग डाल दिए. यस, वेरी गुड. ऑल आर इंक्रीजिंग. ओके, पॉजिटिव. आंसर इज नहीं यार. आंसर इज एस